expecting the weather to be this treacherous, but it is what it is. ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमारी विंड स्क्रीन जो है वो प्रॉपर फ्रीज होती जा रही है। ये देखिए यहाँ पे आइस बनती जा रही है जहाँ तक वाइपर जा रहा है, और हम लोगों ने हीटर भी फुल किया हुआ है ताकि ये इसको मेल्ट करती रहे। And as you can see, our wiper just moved, so we might have to stop somewhere to fix this. यहाँ पे फिर हारिस उतर के वाइपर फिक्स कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा विंडशील्ड आईसी थी जिसकी वजह से वाइपर चल चल के रफ़ होकर वो टूट गया था। खैर हारिस ने जुगाड़ कर लिया एंड अब हम अपना जर्नी कंटिन्यू। कहाँ पहुँच गए हारिस? We are at Nanaimo Departure Bay. We are checking in and hoping to get a ticket and Let's get see. on board. ये we got the tickets. हम पहुँच गए हैं Nanaimo Departure Bay. I'm very bad with the names और अभी तक जगहों का मुझे पता नहीं चला क्योंकि still I'm exploring Vancouver and Canada overall। तो हारिस की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। हम यहाँ पे जब तक हम वेट कर रहे हैं क्यों ना हम थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर कर लें कि व्हाट आवर प्लान इज। तो हारिस की ऑफिस की तरफ से छुट्टियाँ हैं Basically 2 weeks. 2 weeks 10 days in total. So Okay. we have planned a road trip. The first stop is Vancouver, then it's going to be Seattle, Washington. We were not expecting the weather to be this bad, but well, it is what it is. The ferry is on time so far so good. We got the ticket, we're going to board in about 20 minutes. And then it's going to be 1 hour and 45 minutes ferry ride all the way to Vancouver, Horseshoe Bay. And then we got a Christmas dinner to go to. Yeah, we are invited in one of Haris' friends' family home और वहाँ पे हम लोग Christmas lunch करेंगे, lunch or dinner whatever the time we reach there. It's going to be in the middle. Yeah, so it all depends because weather हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम लोग फेरी और जो भी है होटल्स और एयरबीएनबी बुक कर चुके थे, इसलिए हम अपना प्लान भी कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ भी बता दें हारिस कि एयरबीएनबी की फर्स्ट टाइम क्योंकि मुझे पता चला है कि एयरबीएनबी की कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं है। उनकी कैंसिलेशन पॉलिसी 30 days before की है, then you get a full refund, and then it says that if you do like 10 days before, then you get like a 50% refund. But if you're doing like 1 day or 2 days before, there is no refund at all. I mean, it is like you can talk to the host. I mean, if they are nice enough to give you the refund, that's a different thing. But उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है कि क्योंकि अगर आप होटल बुक करते हो डेफिनेटली अगर इस तरह की वेदर कंडीशन है तो वो आपको फुल रिफंड दे देते हैं। जिस तरह हमारी सुबह वाली अर्ली मॉर्निंग की हमारी फेरी थी जो कि इट गॉट कैंसल्ड और उसका हमें फुली रिफंड आ जाएगा। और अभी जो हम वॉक इन आए हैं जो फर्स्ट फेरी अवेलेबल है हमने कहा वो हम कैच कर लेते हैं ताकि हम वैंकूवर पहुंच सकें और फिर अपना नाइट स्टे एंड देन आगे का प्लान उसी तरह कंटिन्यू करें जिस तरह हमारी रिजर्वेशन हुई हुई है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और हाईलाइट करती जाऊंगी कि जब भी अगर इस तरह का वेदर है इस तरह की सिचुएशन है तो डू पैक योर स्नैक्स ब्लैंकेट और इस तरह की चीज़ें कि अगर आपको रोड पे रुकना पड़ जाए इन दैट केस तो आप ताकि आप फुली प्रिपेयर हों। हम नाइफ भी लेकर आए हैं, हम फ्रूट्स लेकर आए हैं, मंचिंग के लिए चीज़ें लेकर आए हैं, ब्लैंकेट लेकर आए हैं ताकि और वैसे भी अगर आप होटल वगैरह में भी रुक रहे हैं और विद द बेबी आई थिंक इट्स you need these kind of things, you know. Exactly. Munching items. और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे अपनी लिस्ट शेयर करूं एसेंशियल्स की जो ट्रैवलिंग एसेंशियल्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई थी निकलने से पहले तो मैंने निकलते हुए भी डबल चेक किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे वो भी शेयर कर लूँगी और आई कीप यू पोस्टेड। गाड़ी अपनी पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं फेरी में ऊपर की तरफ।
हो चुके हैं फेरी में. दिस इज़ डेक 5 और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज इतना क्राउडेड नहीं है. रीज़न बीइंग क्योंकि वेकेशन लोगों की ऑलरेडी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं. और ये यहाँ पे प्ले एरिया है छोटा सा बच्चों के लिए, विच आई रियली लाइक इट. और यहाँ पे आप मज़ीद देख सकते हैं ये ऑफिस है चीफ स्टीवर्ड का. और आई लाइक द एम्बियंस. हाउ अबाउट यू गाइज? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू, आई एम लविंग इट. सो हियर वी आर एट द सन डेक एरिया और फ्रीजिंग हियर. सेफ्टी हैजर्ड्स की वजह से कॉशन डू नॉट क्रॉस इन्होंने इसको क्लोज किया हुआ है. तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए जिस फॉर अ मिनट यहाँ आई हूँ. बेंचेस देखें तो बेंचेस भी इतनी ज़्यादा आइसी हो रही हैं यहाँ पे. आप ये देखिए. तो आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन. तो आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते हैं. इसी वजह से इस एरिया को उन्होंने क्लोज किया हुआ है. और आवर फेरी इज अबाउट टू स्टार्ट. और मैं आप लोगों को थोड़ा क्लोजअप से दिखा दूँ. अच्छा, इतना स्लशी हो रहा है क्योंकि आइस और पानी मिक्स हो गया. कोई स्लिप होकर गिर ना जाए इस वजह से इस एरिया को उन्होंने क्लोज किया हुआ है. तो हम ये एक बराबर में फेरी है, ये भी लोड हो रही है अभी और हमारी फेरी भी इट्स अबाउट टू स्टार्ट. अगर आप देखें तो फेरी में भी फेरी का जो पाथवे जिसमें गाड़ियाँ चढ़ती हैं उसको भी इस तरीके से क्लीन किया जा रहा है. बर्फ़ की वजह से हमारी फेरी 1 घंटा लेट हो चुकी है. उसका रीज़न ये है कि स्नो क्लीनिंग हो रही है. तो विद द हेल्प ऑफ व्हीकल ये शॉवलिंग कर रहे हैं ताकि गाड़ियाँ जो है स्लिप ना हो निकलते वक्त और चढ़ते वक्त फेरी में. हेलो शेल. BC Ferries is pleased to provide a smoke-free environment. Customers are reminded. Just hi Baba. Hi Baba. Hello Baba, why don't you sit here? Yay! Someone is having fun. Yay! ट्रिप का वो टाइम हो गया था जब शेल जो है वो बोर होना शुरू हो गई थी. Vancouver फाइनली ये. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है. लेट मी शो यू गाइस ताकि आप लोगों को थोड़ा गॉड फाइनली हम निकल पाए हैं. यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है और बहुत मुश्किल हो रही है ड्राइव करना. हमारी गाड़ी फंस चुकी है. ओह माय गॉड. पहुँच तो हम गए हैं बट इतनी ज़्यादा स्नो होने की वजह से everyone is shoveling in front of their houses.
cancel. I could have told you. I looked it up. What? I looked it up at 5 o'clock in the morning, Oh, you did? and it said cancel. Oh. 10:40 sailing, right? So I thought, oh, I won't tell them because they probably know already. Yeah, I mean, we were not expecting it. But the issue was all about refund. That was the only issue. I tried to get the refund for this place, and it says that nope, it won't. Seattle, it won't. Yeah. So then we looked at the ferries, and then it's like, oh, there is one at 10:40. See, look here. It's a pretty nice card. Put the cake, sorry. Oh, okay. We got money in it. It says a small amount to put in a shelf saving. Thank you, Auntie and Uncle. You're loving. Hi guys, well, this was our unboxing, and now we're gonna go eat some dinner. Thank you for watching it. अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग अगर स्नो में स्टक हुए हैं तो किस तरीके से आप लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाला है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।